Okay, students, welcome. So let's get started with our topic for the day. As I said, we will be doing, or as you can see from the title, we'll be doing properties of air with respect to aerodynamics, which is very important. These are simple points. And anywhere where you have confusion, quickly clarify by asking me your questions or parking your doubts and then asking me your questions towards the end of the session. Okay. Are we ready to go, everyone? Give me an acknowledgement. You can give me your hands up, hands down. Hmm. Now, let's talk about air. It's very simple. We'll write all important pointers because these pointers, with respect to your exams, are very important and they can confuse you in the questions if you don't have clarity. Okay. How do I get lift? Hmm. So write down. Wings generate lift. In bracket, you'll write force. Wings generate lift force by changing the properties of air. In bracket, you'll write atmosphere by its shape. Air, when flows around the wing, the properties of air change. And the changes in the property of air give me the required lift force. For example, if my wing has a cross-sectional area like this, a very slim, high-speed airfoil, not very symmetric, looks like with a flat surface. If I want to talk about my airflow is divided like this. And this is how my airflow looks like. This is how it will go. Depending upon the camber, depending upon my airspeed, depending upon my angle of attack, depending upon my moments, the airflow will continue in a very streamlined fashion in both sides. And there will come a point, depending upon my speed, depending upon my pressure, depending upon my angle of attack, depending upon my moments, that it will not be smooth anymore. Okay. So the property of air is going to be changed by the shape of the wing. What does it mean? This is my wing cross section. So my this is my air, this is my air, this is my air. Everything is my air here. I fly in atmosphere. I cannot discount my understanding of air. Everything is air. Air is a fluid. Air is a non or a compressible or a non-compressible fluid. If anybody asks, you'll say air is highly compressible. Air is not viscous. Viscosity is the resistance given by a fluid to external compression. विस्कोसिटी के बहुत सारे डेफिनेशंस है हाइड्रोलिक्स में हमें विस्कस फ्लूइड चाहिए होता है जो हम देखेंगे सिस्टम्स बेसिक सिस्टम्स में एयर को आप कैसे भी करके शेप दे सकते हो अ कंप्रेसिबल फ्लूइड और अ फ्लूइड इन इटसेल्फ इज अ टर्म जो तुमने डेफिनेशंस में देखा होगा टू अ मैटर दैट कैन टेक शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट गोज एयर भी वैसी है हमारी पानी भी वैसा ही है हमारा here what happens, I'll just show you what properties of our air are changing because of the shape of the wing. This is density of air, okay, and this is air velocity, okay. ऊपर
वेलोसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिक डेंसिटी कम होती है। नीचे कंपेयर टू अप, वेलोसिटी इज, आई कैन से लो, डेंसिटी इज हाई. This is the change that is happening by the shape of a very good airfoil, very bad. All airfoils will do this. And this is the change in the property in the sentence, the first sentence that we see. A wing generates lift by changing the properties of air through its shape. ये shape के वजह से change कर रहा है. अगर मैं कैम्बर नहीं दूंगा, मुझे उतनी अच्छी लिफ्ट नहीं मिलेगी, मुझे बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत होगी या बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत होगी. ये मुझे कैसे पता चल रहा है? ये मुझे मेरे लिफ्ट के फॉर्मूला से पता चल रहा है, जो हमारे पास ऑलरेडी है कितने दिनों से. ये अगर आपने समझ लिया, आपका एरोडायनेमिक्स 20 to 25% से लेके 100% तक पूरा कवर्ड है. दैट्स इट. देर इज, हर चीज इसके आगे पीछे रिवॉल्व होती है, हर चीज जो हम एक एक सेंटेंस आपको बोलते हैं उस पर रिवॉल्व होती है. ये लिफ्ट कैसे बन रही है वो सब हम देखेंगे इन डिटेल. एक फोर्स को दूसरी फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट लिफ्ट हो रही है, तो ये दूसरी फोर्स कौन सी है? इज इट ड्रैग? इज इट वेट? इज इट थ्रस्ट? ये वेलोसिटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ कैम्बर, इसलिए नीचे वाली वेलोसिटी मेरी कम है. वो कम हो नहीं रही है, वो कम है कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द एयर अबाव. सिंपल वर्ड्स में हमें ये समझना होता है ये क्यों हो रहा है. दोनों एयर पार्टिकल्स को पीछे एक टाइम पे मिलना है वापस, इसलिए ये हो रहा है. एंड ऐसे में एयर ट्रेवल्स टूवर्ड्स लो प्रेशर. एक पॉइंट देने वाला हूं आपको, उसका मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो माई एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो एयर मुझे ऐसे ऐसे ऊपर जाने का ट्राई करेगा यहाँ से, एट द सेम टाइम दैट माई एयर इज फ्लोइंग टूवर्ड्स द ट्रेलिंग एज. ट्रेलिंग एज क्या होती है? दिस पार्ट, this part of the airfoil is called trailing edge, TE. This part of the airfoil is called leading edge, LE. ये जो मुझे फोर्स मिल रहा है, इसको जब मैं फोर्स समझूंगा, तो वो फोर्स मैं समझूंगा इस एंगल से, विच विल बी अ फोर्स लाइक दिस. पूरा मेरा लिफ्ट हो जाता है. डिपेंड करता है कैसा है, बट ये मिल मुझे कैसे रहा है? ये एयर हाई टू लो जाने का ट्राई करता है, उस वजह से मुझे मिल रहा है. बट रिजल्टेंट जो मेरा लिफ्ट है वो हमेशा अपवर्ड फोर्स में दिखाई देता है. आपको जब नोट्स रीड करोगे, व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द थियोरी ऑफ दिस एरोडायनामिक, जो अभी शॉर्ट में आप समझ गए हो, वहाँ ये साफ लिखा है. कोई पुल बोलता है, कोई पुश बोलता है, बट व्हेन यू आर डूइंग अ ग्राफ इन 2D डिमेंशनल एयर फ्लो, वो लिफ्ट हमेशा ऊपर ही होगी, एंड इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू योर वेट. तो इक्वल एंड ऑपोजिट बोलना है तो मैं इतना बड़ा एरो नहीं बना सकता हूँ. वो एरो का लेंथ भी डिटरमाइन करता है, इक्वल है, कम है, ज्यादा है. डायग्राम्स को नीटली देखेंगे हम तो पता चलेगा. तो I'm trying to show you almost equal. अब जब हमारा विंग स्टेशनरी है और एयर आ रहा है, या हमारा एयरक्राफ्ट स्टेशनरी एयर के थ्रू जा रहा है, होता क्या है? एयरक्राफ्ट स्टेशनरी एयर के थ्रू जाता है. जब एयरक्राफ्ट स्टेशनरी एयर के थ्रू जाता है, तो जो एयर की वेलोसिटी हमें मेजर करनी है हमारे फॉर्मूलाज के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एयर फ्लो. एयर फ्लो की स्पीड रिलेटिव टू आर मोशन थ्रू द एयर, दैट इज रिलेटिव एयर फ्लो. सो पूरा आपका जो भी एडायनेमिक्स लिफ्ट जनरेशन है, बर्नौली प्रिंसिपल वगैरह वगैरह पढ़ोगे आप,
ये एक सेंटेंस में पूरा है, अगर आपको ये समझ गया तो आपको सब समझ गया। इट इज जस्ट लाइक रीडिंग दैट बुक सीक्रेट। वो बुक का फर्स्ट पेज खोलो, वो बोलेंगे अगर आपने पढ़ लिया तो फर्स्ट बुक में सब समझ जाओगे, आगे आपको देखने की भी जरूरत नहीं होगी। एंड द सीक्रेट टू दैट बुक इज नथिंग, इट्स सिंपल। थॉट्स बिकम थिंग्स। बस। अभी ये तो चलो फिलोसॉफी नहीं है, ये तो साइंस है। ये एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ओके। ये तो चलो आपके लिए फूड फॉर द डे हो गया, थॉट फॉर द डे, फूड फॉर द माइंड। एनी डाउट्स हियर? If you have doubts, please park it, students. You'll discuss it end of the session or during break. Live, any questions? Write down second point. Density is the most important property of air. इस डेंसिटी को हम थिकनेस ऑफ एयर भी बोलते हैं, ध्यान रखना। यहां पे आप लिखोगे air, as air density decreases, okay, as air density decreases, mass of air flow over wing also decreases। एंड जब ये चीजें डिक्रीज हो रही है तो मेरा लिफ्ट भी डिक्रीज होता है। इन above case, to maintain required lift for decreased density, aircraft speed must be increased। ये रियल फ्लाइंग है। अचानक से आप उड़ रहे हो एंड यू कम अक्रॉस एन एयर स्पेस एरिया वेयर डेंसिटी इज लेस, आपकी स्पीड अगर सेम है, आपकी लिफ्ट कम हो जाएगी, आपका ऑल्टीट्यूड धीरे धीरे कम हो जाएगा। उस टाइम पे आपको क्लिक होना है कि अरे मेरा ऑल्टीट्यूड कैसे लूज हो रहा है, एयर स्पीड तो मेरी सेम है। अभी एयर स्पीड इज अ मेजर ऑफ डायनामिक प्रेशर। डायनामिक प्रेशर इज रिजल्टेंट ऑफ टोटल प्रेशर एंड स्टैटिक प्रेशर। अगर स्टैटिक प्रेशर कम हो रहा है तो टोटल प्रेशर भी कम होगा। डायनामिक प्रेशर रिलेटिवली हमेशा एक वैल्यू दिखा सकता है हम लोगों को, इसलिए हम पढ़ते हैं ए एस आई ओवर रीड, ए एस आई अंडर रीड, ऑल्टीमीटर ओवर रीड, ऑल्टीमीटर अंडर रीड। ऑल्टीमीटर स्टैटिक प्रेशर सिर्फ, एरोडायनेमिक्स में नहीं चाहिए ऑल्टीमीटर, स्टैटिक प्रेशर, टोटल प्रेशर चाहिए हमें यहाँ पे। सो विल बी राइटिंग दीज पॉइंट्स एज वी गो है, टोटल प्रेशर, डायनामिक प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर। बट अगर आप सेम स्पीड पे अचानक लिफ्ट लूज कर रहे हो, मतलब आप लो डेंसिटी एरिया में आ गए हो, तो आपको लिफ्ट को मेंटेन करना है, मतलब ऑल्टीट्यूड मेंटेन करना है या रीगेन करना है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी एयर स्पीड बढ़ाओगे। एयर स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाओगे। प्रोपेलर वेरिएबल है तो प्रोपेलर पिच बढ़ाओगे। रोटर वेरिएबल है तो रोटर पिच बढ़ाओगे। या फिर वेट कम कर दोगे। अभी कोई पैसेंजर को तो उठा के फेंक नहीं सकते, फ्यूल डंप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, डिपेंड करेगा। ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, दैट इज व्हाट टेक्निकल इज ऑल अबाउट। इसी पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। टेक्निकल एरोडायनामिक्स की बात कर रहा हूँ मैम। आर वी क्लियर विद दीज पॉइंट्स?
Come on, students, enjoy, talk. Hmm. Harsh, Nukul, are we clear with these points? Affirm, sir. हर्ष बोलो क्या डाउट है? डाउट नहीं है, मेरे को बस एक चीज कंफर्म करनी थी कि जब हम लोग ऑपरेशनल थे ना सर, तो कई बार समर्स में ऐसा होता था कि ये लोग एक को शॉर्ट फॉर्म यूज करते थे, आरटीओ डब्ल्यू, क्या समथिंग लाइक रिड्यूस टेक ऑफ वेट, उसमें हम लोगों से बैग्स ऑफलोड करा दिए जाते थे समर्स में, क्योंकि बोलते थे एयर डेंसिटी कम है, एयरक्राफ्ट उतना वेट लिफ्ट नहीं कर पाएगा। ये मतलब ये एयर डेंसिटी कम होने के कारण ही है ना सर? हम्म ऑब्वियसली एयर डेंसिटी समर में इसलिए कम हो रही है क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? गिवन अमाउंट ऑफ एयर में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर बोलते हैं, उसकी डेंसिटी कंपेयर टू एयर डेंसिटी कम होती है। वाटर वेपर की डेंसिटी होती है 5/8 कंपेयर टू एयर डेंसिटी। अगर एयर डेंसिटी 1 है मतलब 8/8 है, तो एयर डेंसिटी तो वाटर की इतनी होती है। ह्यूमिडिटी या वो बेसिकली ह्यूमिडिटी की वजह से एयर डेंसिटी कम होती है। टेम्परेचर भी एयर डेंसिटी कम करता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है एयर डेंसिटी कम होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एयर डेंसिटी कम होती है। फॉर अ गिवन ऑल्टीट्यूड नुकुल, ठीक है, फॉर अ गिवन ऑल्टीट्यूड। ये एक चीज़ आपकी कंफ्यूजिंग है जहाँ आप एक दो मार्क मिस कर रहे हो, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये हर क्वेश्चन में आती है, और मुझे लगता है वहाँ ही वो आप गलती कर रहे हो और कहीं नहीं गलती कर रहे हो। दिस इज फॉर यू नुकुल, ध्यान रखना इस चीज को। ह्यूमिडिटी में क्या होता है? वाटर वेपर बहुत ज्यादा होता है, और ये वाटर वेपर का डेंसिटी है ये, तो कम मिल रही है डेंसिटी। वाटर वेपर वैसे भी हमारी एयर कम कर रहा है, हमें एयर नहीं चाहिए। सिंपल है। हमें एयर चाहिए, हमें वाटर वेपर नहीं चाहिए। सो डेंसिटी वहाँ दो रीजन से कम हुई होगी, या तो हाई टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी भी मिली होगी, और ह्यूमिडिटी नहीं है तो बस वो हाई टेम्परेचर की वजह से मेरा डेंसिटी रिक्वायर्ड डेंसिटी से कम है फॉर द सेम टेक ऑफ वेट, फॉर द सेम लैंडिंग रनवे लेंथ, फॉर द सेम फ्यूल कंजम्पशन। अब वो फ्यूल नहीं बढ़ा सकते, उनके बजट के बाहर चला जाएगा, उनका हो जाएगा लॉस। और फ्यूल एक ऐसी चीज़ है जो उनको रियल टाइम में पे करनी होती है, तो वो लोग फ्यूल नहीं एक ज़्यादा डाल पाएंगे, थ्रस्ट ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, रनवे लेंथ भी इंक्रीज शायद नहीं कर पाएंगे, सिर्फ वेट ही कम कर पाएंगे, वो खुद का लॉस नहीं लेंगे वो लोग। वो एक ही चीज़ जो मैंने आप लोग को बताई है, ये जो चीज़ें आप आज पढ़ लोगे तो आपका एरोडायनेमिक्स 50% बेसिक पूरा हो गया है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ एयर में जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। हर्ष, आर यू फॉलोइंग? यस सर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर, समझ गए। तो जो आपने देखा है वो एग्जैक्टली exactly इसका प्रैक्टिकल इक्विवेलेंट है। Students, everything that you're learning is happening every day, every day, every day. और आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ह्यूमिडिटी वाले कि टेक ऑफ रन ज़्यादा चाहिए, थ्रस्ट ज़्यादा चाहिए, स्पीड ज़्यादा चाहिए। स्पीड सेम है तो रनवे लेंथ ज़्यादा चाहिए और कुछ नहीं, स्पीड पिकअप करने के लिए बस। आदित्य, व्हाट्स योर क्वेश्चन? Sir, during a flight, when we face turbulence, is it just due to the air density? टर्बुलेंस एयर डेंसिटी की वजह से ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। टर्बुलेंस डिस्टर्ब्ड एयर फ्लो की वजह से है। टर्बुलेंस अदर एलिमेंट्स इन एटमॉस्फेयर अदर देन स्मूथ एयर की वजह से होगा। डिस्टर्बेंस आइस ग्रैन्युअल्स या जो भी हम पढ़ते हैं, वाटर हैवी क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स, उनकी वजह से होगा। एक क्लियर एयर टर्बुलेंस भी होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। एयर हमेशा रहेगी, एयर की डेंसिटी हमेशा रहेगी। हाई डेंसिटी लो डेंसिटी एयर टर्बुलेंस जरूरी नहीं है क्रिएट करेगा। हाई डेंसिटी एयर तो हमें लिफ्ट ज़्यादा देती है, एज लॉन्ग एज द फ्लो ऑफ द एयर इज स्मूथ, लैमिनार फ्लो। जितना ज़्यादा बाउंड्री लेयर होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। ये दो चीज़ें अभी से दिमाग में डाल लो एज वी गो अहेड। Affirm, sir. हर्ष, क्वेश्चन रिजॉल्व हुआ कि? हाँ सर, हो गया। तुम्हें क्या लग रहा है? वांट टू शेयर अ थॉट? ना सर, मेरे को बस उस समय वही समझ में नहीं आया था कि क्यों ऑफलोड किया जा रहा है। मेरे को ये लगता था कि अब फ्यूल भी समझ तो कर में आया? सकते हैं। हाँ सर, आप क्लैरिटी है। पक्का ना? हाँ सर। हम्म, यही चीज तो आपको एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बनाती है हर्ष। यू शुड नो दैट अबाउट योरसेल्फ, कीप इट अप।
Write down a given, sorry, a given mass of air flowing over wing. Okay. Reduces as density of air reduces. एयर मास, एयर डेंसिटी एक ही बात है, समझने के लिए एक ही बात है। ये जो ऊपर वाली पॉइंट है, सेम पॉइंट आपको इस पॉइंट पे रेफर करना है। There's no other logic, and this is where all the logic revolves. Muskan, are you clear? Do you have open-ended questions here? Negative questions, I am clear of this concept. Nukul Electrical up? को master's dilemma. Okay. Nukul up? Clear, sir. स्पीड भी बढ़ा रहे हैं आप लोग, तो आपका काम हो रहा है, ठीक है ना? Yes, sir. तो दूसरे वर्ड्स में ये पॉइंट लिख लो सब लोग। एन इंक्रीज्ड increased speed of airflow, okay, over wing will maintain को अंडरलाइन करो। ये पॉइंट्स आपके बर्नौली प्रिंसिपल, हाई प्रेशर लो प्रेशर वाले पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं अगर आप लैंग्वेज नहीं समझोगे तो, ठीक है? इसलिए मैं ये पॉइंट्स दे रहा हूँ, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, आप मार्क नहीं कर पाओगे अच्छे से, वो कर जाओगे, ये वाले नहीं कर पाओगे। An increased speed of airflow over wing will maintain the air mass flow, okay, and lift force, and subsequently lift force at its value that's required. अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या आ सकता है सर? मेरा अगर स्पीड बढ़ा रहा हूँ, एयर मास बढ़ रहा है, तो डेंसिटी बढ़ रहा है, एंड आप बोल रहे हो एयरफॉइल के ऊपर मेरा अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है क्योंकि कैम्बर है, तो मेरा डेंसिटी कम हो रहा है। ये कॉन्ट्रडिक्शन आने ही मत देना कभी। दिस इज जेनेरिक वर्ड, जेनेरिक एक्सप्लेनेशन एज टू डेंसिटी कम होता है तो इंक्रीजिंग स्पीड क्या करता है। ये एयरफॉइल के ऊपर नहीं जा रहा है, ये ओवरऑल लिफ्ट की बात कर रहा है। ओवरऑल लिफ्ट ऐसे हम मैनेज करते हैं, ये सारा एरोडायनेमिक्स पे ही काम कर रहा है, एंड वहां पे वो सारे रिएक्शंस होंगे ही होंगे। क्यूमुलेटिव जो भी मेरा डेंसिटी कम हुआ है, वो डेंसिटी का प्रोपोर्शनल ही मुझे मेरे एयरफॉइल के अपर एंड लोअर जगह पे मिलने वाला है। सो डोंट लेट एनी सच कंफ्यूजन्स ट्रबल यू। पहले से ही हम सारी कंफ्यूजन्स अवॉइड कर रहे हैं, आपके सर बहुत स्मार्ट है। अगर आपको स्मार्ट रहना है तो जैसे सिखा रहे हैं वैसे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। You have to understand, in order to be smart and be the best to make out the strategies that we have, you have to follow instructions. Simple. Chalo. Air has substance, air has mass. Okay. Moving mass of air has kinetic energy. अब ये जो हम हमारा हाफ रो वी स्क्वायर देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, हाफ रो वी स्क्वायर जो हमारा आ रहा था बार बार, ये क्या है? ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से आ रहा है? लिखो, के ई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। Kinetic energy is half mass velocity squared. Okay.
इसी काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ रो वी स्क्वायर ऑल्सो, एंड यही मेरा डेरिवेशन बनता है विथ रिस्पेक्ट टू डायनामिक प्रेशर, which is very very important, is equal to half rho v square. Here a key point you have to note: when dynamic pressure increases, ये पॉइंट अभी नहीं लिखेंगे, we have to introduce couple of things. Just erase that and write this point. If speed is doubled, if speed is double, dynamic pressure increases by 4 times. इसलिए हमारा v स्क्वायर वहां पे दिया है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। यू कैन रिफ्रेज दिस पॉइंट एज if speed is doubled, dynamic pressure is 4 times greater. If speed is doubled, dynamic pressure is 4 times greater. और एक ही बात है। These are some key points you need to understand. Ke is kinetic energy, how you want to call it. D is equal to air density. This air density you will term as local, जहाँ की है वहाँ की। ओके, तो जहाँ पे हर्ष आपको एयरपोर्ट का एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ की डेंसिटी कंपेयर हुई थी उस टाइम पर। And V is your speed. सबके यूनिट भी आप लिख सकते हो। ओके, डेंसिटी का यूनिट आप लिखोगे अच्छे से। डेंसिटी यूनिट एनीबॉडी, kilograms per cubic meter. Speed will be measured in meters per second. ओके, ये जो रो सिंबल है ये ऐसे भी लिखा जाता है, रो, सीधा ऐसा। हम थोड़ा नीचे कर्व कर देते हैं बट टेक्स्ट बुक्स में आपको सीधा मिलेगा। Any questions? What is kinetic energy? Can anybody tell me if you remember what is kinetic energy? स्पीड किसका स्पीड है? ये एयर का स्पीड है। यही स्पीड हमारा स्पीड ऑफ द रिलेटिव एयर फ्लो हो जाता है व्हेन एयरक्राफ्ट इज मूविंग थ्रू एयर। वो एक ही बात होगी, फिर वो एयर स्पीड पकड़ लो या रिलेटिव एयर फ्लो की स्पीड पकड़ लो आप, इट्स द सेम। वैसे भी हमें स्पीड कहाँ से मिलती है? ये डायनामिक प्रेशर का मेजरमेंट ही मुझे स्पीड दिखाता है। सो राइट डाउन दिस पॉइंट एवरीवन। What is dynamic pressure?
कैसा है ना स्टूडेंट्स, हम पता नहीं फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स सुन के ही उसको इग्नोर कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से हमारे दिमाग में आया। मतलब एज स्टूडेंट्स मैं बोल रहा हूँ, when we say fundamentals it means that is your thing that you have to master, thinking that's my PhD subject। उस लेवल पे वो फंडामेंटल को मास्टर करना बहुत जरूरी होता है। आई डोंट नो व्हाई, कहाँ से सबकॉन्शियस को लगता है कि फंडामेंटल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। फंडामेंटल्स क्या है, तो बेसिक बेसिक बेसिक, क्या बेसिक, हम बेसिक से इतना क्यों परेशान है दुनिया में? बेसिक है तो सब कुछ है। आई थिंक वो बेसिक सैलरी से कोई खुश नहीं है, इसलिए वो बेसिक वर्ड खराब हो गया है जॉब टाइम पे। भाई बेसिक से क्या होता है, ऊपर का क्या मिल रहा है? आई थिंक ये वहां से पूरे सोसाइटी में आया। आई डोंट नो, आफ्टर द सेशन और ड्यूरिंग योर ब्रेक खाते खाते सोचना और बताना, ये बेसिक से इतना भागते क्यों हैं हम लोग? बेसिक पे ध्यान क्यों नहीं देते हम लोग? और मुझे बेसिक कोडिंग नहीं आएगी तो मैं ऐप कैसे बनाऊंगा? मुझे टीचिंग की बेसिक टेक्निक्स नहीं आएगी तो मैं लेक्चर कैसे लूंगा? मुझे बेसिक कंप्यूटर ऑन ऑफ करना नहीं आएगा तो मैं सेशन कैसे लूंगा? मुझे बेसिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता है तो मैं बैटरी कैसे बनाऊंगा? और मुझे बेसिक सैलरी नहीं आएगी तो ऊपर की कमाई तो उसके सामने क्या ही है? आप लोग प्लीज डोंट बी डोंट बी डिल्यूटेड बाय दिस प्लीज। बहुत हो रहा है, आप लोग नहीं करोगे। यू हैव टू बी द बेस्ट। सो राइट डाउन डायनामिक प्रेशर। व्हाट इज डायनामिक प्रेशर? पॉइंट नंबर वन लिखो, air in motion has kinetic energy. Okay. Anything at rest has static energy. This kinetic energy exerts a force, okay, per meter square. Kinetic energy equal to half into mass into velocity squared. This kinetic energy of air in motion is called dynamic pressure. This is from aerodynamics perspective। हम नेविगेशन में, इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे बोलते हैं डायनामिक प्रेशर का डिस्क्रिप्शन इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रेशर, दैट इज द पीटो प्रेशर, एंड स्टैटिक प्रेशर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी और द एयर स्पीड। नैव स्टूडेंट जिनका नाम नहीं हुआ है, जिन्होंने पढ़ा है, रिमेंबर योर टास्क, गेट सीरियस, ओके? पता चला हर्ष को 100 आने हैं, 99 आ गए, ये क्वेश्चन मिस कर दिया था उसने सिर्फ। This kinetic energy of air in motion is called dynamic pressure। इसको डायनामिक क्यों बोलते हैं, अगर पूछेगा तो बोलना बिकॉज द एयर हियर इज मूविंग इन रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट which is the object flowing in the air। In relation to the air, the air is moving in relation to the aircraft। Focus, air is moving, this is stationary air through which aircraft is passing, okay? एयरक्राफ्ट सारा स्टेशनरी है, सारा स्टैटिक प्रेशर है, थोड़ा बहुत विंड होगा, विंड होगा, हम हेडिंग देखेंगे, ड्रिफ्ट देखेंगे, ट्रैक एरर एंगल देखेंगे। यहाँ पे जैसे मैं मूव करने लगता हूँ, स्टैटिक प्रेशर के साथ साथ थोड़ा डायनामिक प्रेशर आ जाता है। स्टैटिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, डायनामिक प्रेशर इतना सा होता है उसके कंपेरिजन में। दोनों को मिला के इतना ज्यादा मेरा टोटल प्रेशर हो जाता है। दैट टोटल प्रेशर, उसमें से स्टैटिक प्लस डायनामिक में निकाल देता हूँ तो बचता है सिर्फ डायनामिक। दो जगह पे मेरे डायफ्राम्स होता है। आई जस्ट शो यू अ बेसिक डायग्राम ऑफ दैट आल्सो, don't worry, focus। Air is moving in relation
to aircraft passing through it. 6. Note dynamic pressure plus static pressure is equal to total pressure. Okay. Aircraft in motion, the pitot tube will experience total pressure. Airspeed indicator मेरे को डायनामिक प्रेशर देता है. ध्यान रखना इस चीज का. कोई मेरा सेंसिंग एलिमेंट डायरेक्टली डायनामिक प्रेशर सेंस नहीं करता. None of my sensing elements sense dynamic pressure directly. One, this total pressure, you'll write down sensed by pitot tube. And this static pressure is sensed, measured nahi, sensed by static vents. A lot of vents together make a static port. One hole is one vent. Static vent. Sensed, and dynamic pressure, you will say, is measured by airspeed indicator. भाई ये जीनियस लेवल की पढ़ाई है, आप लोग याद नहीं रखोगे तो क्या फायदा. अरे सर तो 1000 एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे, 1000 एग्जाम्स में आउट ऑफ ले आएंगे, उससे किसको क्या मिलने वाला है. कोई अवार्ड दे रहा है क्या मुझे? ना ही मुझे कॉकपिट में बैठ के प्लेन उड़ानी है जैसे आप लोग को उड़ानी है. वो अगर आप लोग नहीं सीखोगे तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं. फिर मुझे कुछ और करना चाहिए लाइफ में. सजेशंस दे देना मुझे. एनी क्वेश्चंस? Okay. I have a couple of answers. Kinetic energy in simple words can be defined as a moving mass can do work until it comes to rest. Okay, good. Energy due to object in motion. Good. Omen Muskan, good inputs. Chalo, quickly we'll add a couple of more points. Very important point is the 7th point, okay? I mean, all points are important. Right on. Dynamic pressure is symbol पहले लिख दो आप चलो. Symbol of dynamic pressure is small q, Quebec, or big Q, Quebec in RT. ओके. एक लिफ्ट का फॉर्मूला आपको बाद में दूंगा जिसमें सीधा क्वेबेक लिखा होगा. कंफ्यूज मत हो जाना, बोलना अरे ये तो वही डायनामिक प्रेशर है, हाफ रो वी स्क्वायर. तो लिफ्ट डायनामिक प्रेशर पे डिपेंड करती है. डायनामिक प्रेशर इज व्हाट? एयर स्पीड. तो लिफ्ट सीधा एयर स्पीड पे भी डिपेंड करती है. सिंपल. एयर स्पीड, लिफ्ट कोएफिशिएंट जो भी होंगे, एंगल ऑफ अटैक के अलावा कुछ है तो देखेंगे, एंड सरफेस ऑफ द एयरक्राफ्ट मेन प्लेन्स. इसका यूनिट भी लिख लो. सिंपल है. प्रेशर का यूनिट क्या ही होगा? प्रेशर स्क्वायर मीटर पे एक्ट करता है. वॉल्यूम या डेंसिटी क्यूबिक मीटर पे एक्ट करती है. न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन कितना होता है आप लोग ने पढ़ा है. डेफिनेशंस पे हम आते जाते रहेंगे. आज भी एक बार डेफिनेशंस रीड करने हैं आपको. क्विक रीड. ओके. एक थरो रीड हुआ फिर क्विक रीड. यूनिट नॉटिक यूनिट न्यूटन पास्कल्स हेक्टा पास्कल्स मिलीबार्स का एक कन्वर्जन कभी दिखाऊंगा आगे, याद दिलाना. दैट विल ऑल्सो मेक यू अ बिग जीनियस. पॉइंट नंबर 9. डायनामिक प्रेशर, मैं यहाँ पे डीपी लिख रहा हूँ, इज proportional to dynamic pressure is proportional to density of air and square of the speed
of air flowing over the aircraft. और वो पूरा एयर पूरे एयरक्राफ्ट पे जा रहा है, हम तो मेजर सिर्फ लीडिंग एज वाला करते हैं, डायनामिक प्रेशर। ये पॉइंट भी एएसआई में साफ साफ सिखाया है। कौन सा डायनामिक प्रेशर मेजर होता है? द वन दैट इज हिटिंग द लीडिंग एज ऑफ द विंग्स। पीटो ट्यूब को और स्टैटिक विंड को इसी हिसाब से लोकेट किया जाता। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मत लिखना, स्क्वायर। ओके, स्क्वायर ऑफ स्पीड of air flowing over the aircraft as well as the density of air. Now I have a trivial question. Who can tell me when aircraft is moving through air, it experiences only dynamic pressure, not static pressure? Is it true or is it false? When aircraft is moving through air, it experiences only dynamic pressure and not static pressure. ओपन है, अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं आप लोग। False. Sir, At the time false. after my call. False. वेरी गुड। कोई False. ज्यादा At the सोचेगा time Alfa बोलेगा सर Romeo Mike. नहीं नहीं ट्रू है क्योंकि डायनामिक में स्टैटिक आ रहा है। अरे नहीं, क्या बोल रहे हो आप? नहीं, रिलैक्स, वो टोटल प्रेशर है। गुड जॉब एवरीवन। फॉल्स। एन एयरक्राफ्ट मूविंग थ्रू एन एयर or airflow over an aircraft, whatever it is, the aircraft will have both static pressure and dynamic pressure. Students, static pressure is always there. Okay, it's always there. कभी नहीं जाएगा। लास्ट पॉइंट लिखो। डायनामिक प्रेशर इज dynamic pressure is common for all aerodynamic forces. Okay. Next point, dynamic pressure. It determines what air loads which are imposed on aircraft moving through air. Air loads, loading, stress, स्ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेस है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड्स अच्छे नहीं है। एक एयरक्राफ्ट को ऑलरेडी लोड्स रहेंगे, बट व्हेन द एयरक्राफ्ट इज इन मोशन, जो हम बेंडिंग देख रहे हैं, टॉर्शन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब डायनामिक प्रेशर की वजह से आ रहा है। सारा मोस्ट ऑफ द लोडिंग व्हेन द एयरक्राफ्ट इज मूविंग थ्रू एयर कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर एयर लोड्स। इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड इफ यू थिंकिंग सर हवा क्या ही है, हवा में बातें मत करो, हम लोग बोलते हैं व्हेन यू आर स्टूडेंट ऑफ एरोडायनामिक्स, हमारे लिए हवा में बात करना इज ऑल्सो बिग डील। ऑल्दो वी डोंट थिंक एयर हैज मास, बट एयर फ्लोइंग एट 100 नॉट्स कैन डिस्ट्रॉय मैन मेड स्ट्रक्चर्स ऑल्सो। एयर अगर 100 नॉट जा रही है, हमारी एयरक्राफ्ट तो 400 नॉट जा रही है, तो सोचो हमारी एयरक्राफ्ट कितनी स्ट्रांग है या कितनी एरोडायनामिक है। सो लास्ट पॉइंट ये लिख लो आप, क्वेबेक और क्वेबेक इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। ये हो गया आपका डायनामिक प्रेशर। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Students taking the session on their own, and if you don't need a long break, you still have to take a short break to let your mind make some space, soak what we have done, and then make some space for what we are going to do after the break. Please come back sharp in 30 minutes. 2 बजे आ जाओ सब लोग, and we'll continue from here. This is the most interesting concept. I'm telling you, if you can master this, your aerodynamic is so easy to learn ahead, and you'll just quickly, step, and be done with subsonic, transonic, stability, control. है ही क्या और कुछ नहीं, और कंट्रोल ऑलरेडी आप लोगों को आधा आता। Okay, students, let's take a break and come back and continue from where we are leaving.
Welcome back, students. Are we all back? I think we're missing someone. I think we're missing Aditya. Okay, so once we are back from the break, we need to understand the importance of what we are learning right now. And it's not just your exams, but it is important with respect to your flying also, the understanding of how we are actually getting the lift and what is that one factor that is actually giving us all the lift and what is that one factor that we can actually control through the thrust levers, which is the airspeed. Now we are going to talk about airspeed because airspeed indicator gives us airspeed. But the airspeed indicator is not a speed gauge, it's a pressure gauge. Airspeed indicator is the instrument that will measure your dynamic pressure. And your dynamic pressure is the determining factor for all your aerodynamic forces. That's why we have to know about this dynamic pressure before we go ahead and see airfoil characteristics. We cannot uh, we cannot really, you know, uh, ignore certain things which will lose us or make us lose the building blocks for a safe conduct of flight, where in order to stay in air, I need to have sufficient amount of lift generated all times by my main planes. Once again, warm welcome, students. I hope you had a good break. And did you think about that thing about basics? Anybody wants to share an idea? Why do you think we just tend to take basics for granted? There are a couple of functions that we have already seen. Okay, we have an input from a student and he's saying, but because we assume that we have plenty of time with us to capture and master the basics. Okay, I wish we had that sense that we need to master and need time for basics, but I get your context. It's fine. Any doubts on kinetic energy or dynamic pressure or its properties? Now this sentence that we have written above, if speed is doubled, the dynamic pressure will be 4 times greater. We are going to see a link with respect to this in a while from now. What is that link? You be on the lookout for the same. Take a look at all pointers right now, students, everyone. Students doing it at their own pace. You also take a look at all pointers. See if you have any doubts. Yes? Call your instructor or message your instructor to park your doubts. We know the sum of static and dynamic pressure is total pressure. This total pressure is also called as pitot pressure. There's another word given to it, which is stagnation pressure. Okay. First, we write more points. Okay. Write down. A pilot has to and needs to know what, how much dynamic pressure is available. Understand, students, when you're doing your flight training, you know
What is that one factor that would be giving you dynamic pressure? That will be the speed of your aircraft. And remember, it's all about the feel. How do I know? I cannot measure dynamic pressure directly. I do know I have total pressure. Write down. Dynamic pressure is also called as stagnation pressure. So I have this formula. Total pressure is equal to static pressure plus dynamic pressure. What I do, I take dynamic pressure here and I take total pressure there. And what do I get? I get dynamic pressure is equal to total pressure minus static pressure. Now I call it pitot pressure, the total pressure, because it is measured or it is sensed. What we understand by measured, it is sensed by a pitot tube. This dynamic pressure, okay, is very important. Why? Because dynamic pressure is dependent on air density, rho, okay? And it is also dependent upon speed of aircraft. We already know these points. We have to understand these points again and again, again and again, and see whether our understanding is clear or not. Write down factors affecting air density, and in return, they will be affecting my dynamic pressure also. Number one, temperature. Number two, static pressure. This is where you'll see static pressure come in picture. And three, humidity. Now we'll be coming across a statement ahead where what Harsh was saying a while ago is actually true. Yes, Muskan, what's on your mind? The right side of whiteboard is not visible. Yeah, thank you. Is it visible now? Affirm. Thank you so much. इसको बाद में छोटा कर दूंगा मैं. So what are the factors affecting air density? Temperature, static pressure, humidity. Altitude की बात यहाँ नहीं हो रही है. Okay? लिखो. Increasing temperature decreasing density, decreasing static pressure, decreasing density, increasing humidity, decreases air density. Read these points, understand, and tell me if you don't understand. Simple. We have spoken a lot on it. Here, if I say temperature decreases, density increases, static pressure increases, density increases, humidity decreases, density increases. Any doubts? Remember to park your doubts and discuss at the end of session if you don't want to discuss it right now. I mean, why would you not want to? Simple. You'll write one more point. Changes in temperature
or changes in air density due to temperature are significant in all phases of flight. Here you'll write changes in air density due to static pressure are significant in all phases of flight. Changes in air density due to humidity is significant during, or you write is most significant during landing and take off. ह्यूमिडिटी नीचे ही आपको ज़्यादा मिलेगी, वैसे भी ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना इम्पैक्ट लैंडिंग एंड टेक ऑफ के बाद होगा। इसलिए जब हर्ष ने मुझे बोला, मुझे तो पता है ये चीज़ें, तो मैं तो सीधा बोला यार टेम्परेचर ज़्यादा ह्यूमिडिटी से रिलेटेड होगा, टेम्परेचर भी इम्पैक्ट करेगा। जस्ट इन केस ह्यूमिडिटी का इशू नहीं था, देन डेफिनेटली टेम्परेचर ही था। बट वो बेसिक टेम्परेचर में हम हमेशा काम अगर कर चुके हैं, एंड उस दिन अगर मैंने वेरिएशन देखी थी एंड RTOW देखा था एंड ऑल, तो फिर डेफिनेटली ह्यूमिडिटी की वजह से देखा था। So this is how we compare that situation. So I'm probably 50-50 right in both cases accurately. जैसे हम वहाँ का उस दिन का वेदर रिपोर्ट देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कंपेयर टू द प्रीवियस डे और प्रीवियस फ्लाइट जहाँ पे RTOW नहीं लिया था आपने। सही बोल रहा हूँ कि नहीं हर्ष? यस सर। सही जा रहे हो हर्ष? इसलिए आपको 9900 पे रख रहा हूँ मैं। हम्म। एक पॉइंट क्लियरली लिख लो ताकि आप लोग को इश्यू ना हो। I'll dictate this. Increasing altitude. Okay. नोट लिख लो फटाफट। Increasing altitude decreases air density. But increase in altitude decreases temperature. And decrease in temperature increases density. तो ये और ये एंड और ये तीनों में कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को रिजॉल्व करना है कि ये जो इम्पैक्ट है टेम्परेचर एंड डेंसिटी का, कंपेयर टू दिस इज नेग्लिजिबल। समझे? तो ये जो इंक्रीज टेम्परेचर और डिक्रीज टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड एंड डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज इन डेंसिटी की बात हो रही है, ये कनेक्टेड है दोनों। तो ये दोनों नेग्लिजिबल हो जाता है इम्पैक्ट। द इम्पैक्ट इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड एंड डिक्रीज इन डेंसिटी। ये डेंसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर ड्यू टू ऑल्टीट्यूड। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। So you'll write this point: increasing altitude decreases density because the effect of decreasing static pressure is more dominant than effect of decreasing temperature. In bracket you'll write with increase altitude on density. नुकुल समझ आया है तो बताओ। Yes, sir. क्लैरिटी? क्लैरिटी की बात हो रही है Yes, sir. क्या? यस? बार बार बोलना पड़ेगा आप लोग को, एक्नॉलेज स्पेसिफिकली करना है।
नींद आ रही है सबको? हाँ, खाना खा के। नुकुल जल्दी करो यार, पूछ रहा हूँ, तुम्हारे फायदे के लिए पूछ रहा हूँ। Yes, sir. As my increase in altitude, my density will be decreases because the static pressure decrease. Mm-hmm. A relationship with decreasing temperature and increasing density compared to increasing altitude, decreasing temperature, increasing Sir, if density. my temperature will be decreases, then um, सब लिखाया है, सब लिखाया है। नहीं है क्लैरिटी फिर भी यस बोल रहे हैं, हम ट्राई भी नहीं कर रहे हैं क्लैरिटी लाने का। क्या लिखा है यहाँ पे? with increase in altitude on densities. ये है मेन फैक्टर, आपका ध्यान है कि नहीं है? कैन यू रीड इट आउट? कम ऑन क्विक। Yes, sir. So increase in the altitude, it will decrease the density because the effect of the decrease in static pressure, and it is more dominant when effect of temperature will be decrease with increase in altitude It on will be more density. dominant compared Com- compared to the impact of decreasing temperature, increased density with altitude. Good. चलो बेटर है, गुड जॉब। चलो, अब we know a pilot has to have a means of measuring or knowing how much dp is available, mainly because all aerodynamic forces are derived by my dynamic pressure, all air loads are derived by my dynamic pressure. Okay, write down measuring, और डिले नहीं करना है, क्विक एक्नॉलेजमेंट चाहिए मुझे। And students taking the session later, you have to acknowledge in real time, some or the other way. Measuring dynamic pressure. Why? क्यों? Simple. All aerodynamic forces on aircraft are determined by dynamic pressure. अभी डायनामिक प्रेशर को क्यू लिखते हैं अपन, ठीक है? बड़ा क्यू लिख दो, छोटा लिख दो, आर डिटरमाइंड बाय डायनामिक प्रेशर. So it is very important for my pilot to know what is the value. We have a question, is dew point related to humidity? It can be. Somewhere it is. At what temperature water vapor is formed? वाटर वेपर आ रही है, फिर सैचुरेशन देखते हैं एयर की. एयर शुड नॉट बी सैचुरेटेड. ओम सही जा रहे हो? इट मीन्स कीप इट अप. ये एरोडायनामिक जगह एरोडायनामाइज हो गया. Students, make sure you're all hydrated when you are doing the hard work going ahead. तबीयत का ध्यान रखना है. स्टूडेंट्स की एग्जाम्स आ रही हैं, दे आर नॉट हेल्दी बिकॉज सिकनेस आ रहा है बहुत. आई एम ट्राइंग टू स्टे afloat. ओके, हाउ डू आई मेजर माई डायनामिक प्रेशर? सिंपल है. ये मेरी रही एयरक्राफ्ट यहाँ पे. अब मैं एयरक्राफ्ट को आपको दिखा रहा हूँ टॉप व्यू से, ठीक है? ये मेरे मेन प्लेन्स हो गए एयरक्राफ्ट के. ओके, प्लेन का लीडिंग एज हो गया, यहाँ पे स्लैट्स आ जाएंगे हमारे वगैरह वगैरह. I'll have a static port for measurement of static. So I'll first keep this in mind. Dynamic pressure is equal to total pressure minus static pressure. तो मुझे टोटल प्रेशर चाहिए, स्टैटिक प्रेशर चाहिए. मैं क्या करता हूँ, मैं है ना यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूँ बहुत बड़ा सा, विच इज अ
a device like this and everything is in a sealed chamber, उस पर मैं एक पॉइंटर रखता हूँ. दैट पॉइंटर जनरली इज योर ASI पॉइंटर. हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं. मेजरमेंट्स डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स या डिजिटल कॉकपिट में भी एक ही वे में होते हैं, वो बस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटली कन्वर्ट कर दिया जाता. सो मैं एक सील्ड चेंबर लेता हूं. आई टेक अ सील्ड चेंबर. ओके. इन दैट सील्ड चेंबर आई विल हैव समथिंग लाइक दिस. चेंबर विद इन अ चेंबर होता है जनरली है, इसलिए मैं दो चेंबर बना रहा हूँ. एक जगह पे मैं डालूंगा स्टैटिक प्रेशर, एक जगह पे मैं डालूंगा टोटल प्रेशर. ऐसा. तो टोटल प्रेशर मेरा कहाँ से आ रहा है? टोटल प्रेशर इज माय पीटो प्रेशर. तो ये इसकी लिंक कहीं जाएगी. ऐसी एक ट्यूब होगी, पीटो ट्यूब, ओपन, पैरेलल एंड ओपन विथ वन फेस ओपन ऑन द फ्रंट एंड. एंड वहां से ये मेरा सेंस होके, सो अपन इसको थोड़ा स्ट्रीम को फ्री फ्लोइंग रखते हैं. और डिफिकल्ट है ये रिजल्ट. नॉन डस्ट मिलेगा, नॉन डस्ट. याद है स्कूल में नॉन डस्ट का कितना क्रेज था? आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, but only rich people had non-dust and we had those little ones. हमें भी चाहिए non-dust. 3 रुपए का रबर कौन लेगा? अभी वो सब चीजें इतनी मैटर नहीं करती, बट हम स्कूल में थे तो बहुत मैटर करते थे. फिर वो बेसिक रेड कलर की पेंसिल क्यों, हम लोग को फ्लोरल पेंसिल चाहिए. और वो सिल्वर कलर की पेंसिल तो बाप रे, देख के ऐसे लगता था कोई जेट उड़ा रहा है और हम साइकिल पे चल रहे हैं. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टोटल प्रेशर ले लेता हूँ विच इज माई स्टैग्नेशन प्रेशर और पीटो प्रेशर. एंड मेरे को दूसरा प्रेशर चाहिए, वो है स्टैटिक प्रेशर. तो स्टैटिक प्रेशर मैं कहाँ से लूँगा? स्टैटिक वेंट्स. आई कैन हैव माई स्टैटिक वेंट्स एनीवेयर. मैं यहाँ छोटे छोटे वेंट्स रखता हूँ साइड में, एयरक्राफ्ट के साइड में. ऐसे गोल होगा, उसमें 3-4 वेंट होंगे छोटे छोटे आपके. अब मैं ना एयर फ्लो बना रहा हूँ. आई एम मेकिंग एयर फ्लो इन येलो. ये एयर फ्लो सीधा अंदर जाएगा और यहाँ का एयर फ्लो है ना ऐसे जाता है बाहर. ठीक है, पैरेलल. स्टैटिक वेंट्स के ऊपर से भी एयर फ्लो पैरेलल जाता है. एंड पीटो के अंदर तो सीधा एयर फ्लो जाता है, वो भी पैरेलल होता है टू द एयरक्राफ्ट लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस और द एयरक्राफ्ट फ्लाइट पाथ. ओके. कभी भी मत सोचना आप लोग कि स्टैटिक वेंट पे मेरा ऐसे घूम के जा रहा है. एयर फ्लो पैरेलल ही होता है स्टैटिक वेंट पे. इसीलिए when you go through certain errors of ASI, which you will see position error, maneuvering error, and so many errors, those errors happen when we are doing side slipping or banking or rolling. Then we don't get a parallel or a streamlined flow over the static vents. We get a little bit of that slide slip based extra or local pressure. तो जनरली वहाँ local pressure feel होता है, local static pressure feel होता है. हमें वो वाला नहीं चाहिए होता, हमें ये वाला चाहिए होता. So that is one of the errors that will determine whether we are getting a proper value of dynamic pressure or not. So मेरे को दो सेंसेस मिल रहे हैं. इसका सेंस मेरे को कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग समवेयर यहाँ से. So total pressure, static pressure will be connected by what we call as a diaphragm. Diaphragm a movable, stretchable एक एलिमेंट होता है. जनरली इट विल बी corrugated like this, ताकि ये स्ट्रेच होने में एरिया ज़्यादा चाहिए तो एरिया ले सकता है और कम एरिया ले सकता है. सिमिलर टू स्प्रिंग बट अ थिन शीट ओवरऑल. इस बलून कैसे होता है? आप एयर डालोगे एक्सपांड होता है, निकालोगे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. बलून कैन ऑल्सो एक्ट एज अ डायफ्राम बट सिंगल डायफ्राम. हियर डायफ्राम विल मीन दैट दो जगह से अलग अलग इनपुट्स आ रहे हैं आपके. एंड बेस्ड अपॉन दोज इनपुट्स ये डायफ्राम आपका मूव होता है ऊपर नीचे. एंड ये डायफ्राम पे सेंटर में आपका एक पॉइंटर होता है. सेंटर. ये पॉइंटर कहीं भी होगा आपका, जैसे इंस्ट्रूमेंट आपका डिजाइन हुआ है.
अब ये डायफ्राम ऊपर नीचे जा रहे हैं, उसके हिसाब से ये पॉइंटर आपको एक वैल्यू दिखाएगा ऑन अ डायल. दैट डायल इज कैलिब्रेटेड एंड डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट विल रीड आउट द वैल्यू ऑफ डायनामिक प्रेशर. But to the cockpit in the aircraft, we don't read dynamic pressure. We actually read a speed on the airspeed indicator, which is indicated airspeed. Speed indicated on the ASI. तो ये ASI बीच में वापस कहाँ से आ रहा है? We already know ASI is a pressure gauge and it measures dynamic pressure. This is the operation of ASI, and this pointer is the visual indicator of values on the ASI. ASI is a pressure gauge, differential pressure gauge. It measures dynamic pressure. ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाए हैं एएसआई में आप लोगों को. अभी लिख लो आप लोग प्लीज, इसको दोबारा कभी भूलना नहीं है. रिमेंबर द एयर फ्लो हैज टू बी पैरेलल. ओके, तो यहाँ से मेरा जा रहा है, अंदर आ रहा है, मस्त स्टैटिक प्रेशर पूरा पूरा, एंड इट विल बी फिल्ड विद स्टैटिक प्रेशर. एंड यहाँ से मुझे आ रहा है टोटल प्रेशर. It would be filled with total pressure. And I already know dynamic pressure is total pressure minus static pressure. So दोनों जगह पे ध्यान से देखना है. यहाँ पे अभी total pressure is equal to static pressure plus dynamic pressure. तो ये static pressure एक दूसरे को cancel करता है. And the movement of the diaphragm is happening only because of the dynamic pressure. And that dynamic pressure is moving my pointer. And that pointer will be calibrated in some or the other way to give my pilot an indication of dynamic pressure in the form of indicated airspeed. But indicated airspeed is not a speed. It is just a pressure. It is just a dynamic pressure. There is only one speed your aircraft will follow, and that is true airspeed. And this is your top level of learning with respect to airspeed. Every other speed is just a pressure. Indicated airspeed, equivalent airspeed, calibrated airspeed, they are just pressures. There's only one speed, that is TAS. Ideally, all the differences and corrections are made, and what the speed the pilot sees is the pilot follows. And we also get these values in our aircraft flight manual. Flight manual means the manual that is solely based upon flying the aircraft. So the diaphragm, on either side of the diaphragm, the pressure gauge, the differential pressure gauge, which is my ASI, will cancel out static pressure on each side, and the only remaining pressure that will be moving the diaphragm will be dynamic pressure. And a needle, a pointer or a needle, will show me the changes in dynamic pressure. Very simple, right? So remember these points when you're going through the notes. It is very nicely described in the notes. We don't need to make notes on here. We need to understand. We'll write relative airflow, or we'll write airflow. Focus on the points parallel, not parallel, and everything when you're going through your reading task. If you are able to finish this, then today evening or by some time in evening, I'll be giving you the reading task so that before lecture tomorrow, you are done with your reading task. Okay. So write down what measures Q, airspeed indicator ASI measures dynamic pressure. Okay. Write down ASI, airspeed indicator is a pressure gauge. Write down ASI is calibrated at ISA, mean sea level pressure,
or density. So ISA means sea level density. That is 1.225 kilograms per meter cube. It means if your aircraft is flying through air where air density is equivalent to international standard atmosphere based density, that is 1.225, only then your instrument will give you your accurate value of dynamic pressure or accurate value of your speed. But it is not a problem for us because we get the actual value of the dynamic pressure irrespective of what it is calibrated to, and we only need the actual value of dynamic pressure. So always remember, instrument is calibrated at ISA mean sea level air density, which is this kilograms per meter cube. And it states that only when we are flying at that density, only then we'll get a true or realistic indication of the speed. But this is not a problem because our pilots, they need an indication of dynamic pressure, and this instrument gives us the ratio based value of my dynamic pressure, which is accurate. Write down about measurement, instrument measurement design. It is a very important statement which I wanted you to keep a lookout for. Instrument, dynamic pressure, measure, design. A very simple term. Write it, remember it, try to understand it, do a little bit of reading and thinking on it if you don't instantly get it. And then also, if you don't get it, you ask. Don't directly say, I don't understand without trying to make your mind understand, is what I mean to say. So, instrument, dynamic pressure, design, dynamic pressure measuring device, measure design. How? Write down. ASI is made in such a way where square root of dynamic pressure is represented in knots or miles per hour. That is nautical miles per hour or miles per hour. Now, this is not a deep level learning. This is basic learning which very few people will know. That जो मैं डायनामिक प्रेशर मेजर कर रहा हूँ वो डायरेक्ट डायनामिक प्रेशर मैं नॉट्स में नहीं दिखा रहा हूँ, उसका स्क्वायर रूट वैल्यू मैं नॉट्स में दिखा रहा हूँ. द स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ द डायनामिक प्रेशर is what the needle is showing me in units that relate with my airspeed, that is knots or miles per hour. Square root. अब ये स्क्वायर रूट है एंड वो डायनामिक प्रेशर का या लिफ्ट के कोएफिशिएंट में वेलोसिटी स्क्वायर है, इसलिए कोई चीज़ डबल करता हूँ तो कोई चीज़ 4 टाइम्स ग्रेट होती है, इसलिए वहाँ हाफ है और वहाँ पे स्क्वायर है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंकिंग दैट गोज इनटू इट which you can keep for later once you have remembered all these things. Now, for my pilot to get realistic input, keeping a square root of dynamic pressure in knots is such that if I increase my dynamic pressure, then all the calculations, half rho v square, everything will be done. And twice the dynamic pressure will result into twice the speed of the aircraft through air. यहाँ स्क्वायर रूट है, वहाँ स्क्वायर है, वो दोनों में को मिला के एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देता है. एंड दिस पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर. कैसे देते हैं आप आगे जाके कभी पढ़ोगे तब समझ में आएगा, बट क्या देते हैं वो बहुत जरूरी है हमारे लिए अभी. एंड इट्स जस्ट मैथ. सो यूल राइट दिस पॉइंट डाउन about this.
These miles that I say are your statue miles, okay? Like there are two types of miles, nautical miles and statue miles. Simple. So हमारे लिए तो एक ही माइल है. In India, we follow kilometers, right? Right on this point, from above point, we get if indicated airspeed is doubled, in bracket you will write your dynamic pressure, okay? Then speed of the aircraft through air is also doubled. Take couple of minutes to read and remember these points, please. Everybody soak it in. So my dynamic pressure, that is actually giving me my pointer needle deflections on my instrument, is not itself, but it's square root of it. It's not 1/4, it's square root. And because of this relationship, where a square root value of my dynamic pressure is giving me moments to my needle of my indicator, I get a relationship where whatever airspeed or dynamic pressure my instrument shows, indicated airspeed is nothing but the direct dynamic pressure that you're seeing on the instrument. If I increase that, my airspeed also increases. So I get a direct relationship on my instrument. I don't have to do permutation combination. I don't need to have a logarithmic scale there. I have a linear scale. जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स करा अच्छे से, लॉगरिथमिक लीनियर पता ही होगा आपको. जिन्होंने नहीं करा है वो पार्किंग लॉट में लिख दो लॉगरिथमिक एंड लीनियर स्केल. It's just chapter 1 2 for instruments. Quick. Let me know if you have any questions. Done? Now there'll be a lot of complications. We don't need to get into complications. I'll be giving you a simple, what do we say? I'll be giving you a simple flow chart of these pressures and these speeds. But when you're going through your notes, take your time to understand and see if you have any questions. Okay? So my ASI directly gives me Quebec. This Quebec is nothing but indicated airspeed. Okay? Whatever we see. Through this indicated airspeed, I do a lot of corrections and I get myself something known as calibrated airspeed. What are these corrections? After my calibrated airspeed, I get something which is called as equivalent airspeed. What are these corrections that are giving me equivalent airspeed? And after this equivalent airspeed, I get my only true speed. Rest everything is a pressure. So what is the correction made over here that is helping me come out and get my TAS? TAS or true airspeed is the only
speed of the aircraft. Write down TAS. What is TAS? TAS is true airspeed. It is the speed of aircraft through air. It is the only speed. In bracket, you'll write note. Rest all above are pressures. Which pressures? Derivatives of dynamic pressures. Simple. So IS is a pressure. Calibrated airspeed is a pressure. And equivalent airspeed is a pressure. Now, this is very important for theoretical questions. Do not miss it. But they are called speeds because dynamic pressure directly, indirectly is a derivative of my airspeed, and all these speeds are going to give me something. Now I want you to write down another value for TAS. TAS is equal to equivalent airspeed upon square root of relative density. Relative density has a symbol which is opposite, which is like this. All other speeds are pressure. So we'll say IS when corrected for pressure error. Okay. This pressure error is also called as position error. It is because of the position of my pitot-static vents, pitot tube static vents, and when my aircraft is maneuvering, when I'm using flaps, when I'm using lift augmentation devices, when I'm using landing gears, different configurations will keep changing the sense pressures by disturbing their flow inside them or about them, around them. And my dynamic pressure will be false. It will not be correct. So when I am doing corrections in the sensing system for these problems, and then if I'm getting a value of a pressure, a dynamic pressure, that is called as calibrated airspeed. This calibrated airspeed is only going to be working, okay, when the aircrafts are flying slowly. So you will write calibrated airspeed is a pressure. Secondly, you will write about calibrated airspeed. Derives dynamic pressure accurately at low speeds. Only at low speeds. Corrections for your pressure error can be there in the cockpit. There could be a small cockpit correction card for your readings in the flight deck. It can be also in the flight manual of your aircrafts. And it will include any inherent instrument error held in the instrument due to the design of the instrument. So you'll write includes instrument error. Okay. Then you'll write speed corrections can be in flight deck and or aircraft flight manual, AFM. Calibrated airspeed derives dynamic pressure accurately at low speeds or aircraft flying slowly. Okay.
When I say equivalent airspeed, I do know equivalent airspeed is also pressure, but equivalent airspeed has this good thing, which is it derives dynamic pressure accurately at high speeds. Students who remember instruments from navigation, we have seen less than 300 TAS, more than 300 TAS. That is this lower, higher. This we have correction, which is correction for compressibility error. What is this compressibility error? At high speeds, inside the pitot tube, there'll be a little bit of stagnation happening. All the dynamic, static, total pressure will be accumulated, and air might tend to get compressed a little bit. Compression of the air can increase in the sense pressure value. When you'll do jet engine, you'll see how compression helps us get more air mass into the engine to develop the thrust compared to a normal air mass without compressor blades in the engine. There is a reason your single propeller aircrafts cannot fly a certain point because we don't get enough air mass to give the reaction of the moment. Jet engines, on the other hand, will take the same air mass that a propeller aircraft would be. Then they'll compress it, compress it, compress it. They'll compress it, and in the same air mass that my propeller is throwing back this much, my jet engines will compress this much and this much, take more this, compress, 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 and together that big value which is compressed to this much, together increases maybe 10 times, 20 times. So that is what the compression ratio is. 1 is to 20, 1 is to 15, 1 is to 12. So I get that much value of air mass in the same time with the same configuration and all, and I burn that with the fuel to get excess amount of thrust compared to a single propeller aircraft. डेंसिटी आज जो समझ रहे हैं वो आपको पूरा टेक्निकल में हेल्प करने वाला है आगे. एयरफ्रेम में ज्यादा कुछ नहीं देखते हम डेंसिटी का, बट एयरफ्रेम इज ऑल्सो एरोडायनामिक इन स्ट्रक्चर. So that is compressibility error. Okay. Equivalent airspeed is the indicated airspeed corrected for position error and compressibility error. ऐसा. So what do I say? I say that CAS, my CAS, okay, when it is corrected for compressibility error, it gives me in equivalent airspeed. EAS stands for equivalent airspeed. And when my IAS is corrected for position error, it gives me CAS. And my IAS corrected for compressibility error plus compressibility error, sorry, my IAS corrected for pressure or position error plus compressibility error can directly give me EAS. How? This and this. Like the statements could come in any form. They could come to you in a flowchart form, statements in questions, or they could come to you directly. IAS gives equivalent when it is corrected for position error, instrument error, when it is corrected for position error, compressibility error, when it is corrected for position error, instrument error, and compressibility error. So it will be all three because here position error correction includes your instrument error also. Any questions? Again, my compressibility error will also give me a false dynamic pressure reading, but it is only impactful at high speeds, only affects at high speeds. Low speeds, ES होगा ही नहीं. आप जो सेस्ना फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल में जाओगे वहां आपको कैस एंड सीधा टैस मिलेगा. ES आएगा ही नहीं वहां पे आपके पास. ES तब आएगा जब आपकी एयर स्पीड एक वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाती है.
Write down another point for TAS. As ASI is calibrated to mean sea level density 1.225 kg per meter cube. Okay. If my aircraft now, because of this, if my aircraft is flying, let's say at an altitude of 10,000 feet, so I'll get a standard ISA level density for that. If I'm flying at 20,000, 30,000, 40,000 feet, I'll keep getting the same value of density as given my ISA, and then I'll have my actual density. Okay. So if I have to understand with respect to mean sea level examples only, you can always check in your CX3s while you're doing this. So you'll come across an example that you're flying at 40,000 feet. At 40,000 feet compared to your mean sea level, we can say your standard density is 1/4 of the above 40,000 feet. 1/4 of mean sea level, that is 1/4 of 1.225. कितना ही होगा? 300 ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होगा. ठीक है, 0.3 करके कुछ आएगा आपका. इसका मतलब क्या है? This could easily come in your questions. That's why I'm giving you directly, okay? If I'm flying at 40,000 feet, my standard density is 1/4 of mean sea level. That is, इसका 1/4 हो जाएगा. Okay? Therefore, this is the relationship of relative density, and I can see its square root. वहाँ 1/4 आ रहा है. स्क्वायर रूट 1/4 का रिलेशनशिप कॉमन है. यहाँ पे आपको बस लिंक रखनी है चीजों के बीच में. Therefore, at 40,000 feet, to maintain same EAS, in bracket you will write that I had at mean sea level, aircraft has to move twice the speed. ये हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, ये हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये आपको इक्वेशन के थ्रू मिलने वाला है. And this is one statement that I would want you all to read carefully when you're going through your notes and be aware. ये क्वार्टर, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, डबल, यहाँ ही सिर्फ देखने मिलने वाला है आपको, कहीं और नहीं देखने वाला है. तो इन चीजों को आप मास्टर कर लोगे तो एग्जाम्स में आपको कंफ्यूजन आएगी ही नहीं, बिकॉज आपको इन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे एंड इन्हीं पे आपको क्लैरिटी होगी. दैट्स इट. थिंक थिंक थिंक. Very often we have seen that airspeed is also represented to us in Mach number. Now Mach number is related to speed of sound. Now speed of sound, okay, average standard ISA value, if I have to assume, is generally we have this figure 300, 350, 360, 320. It goes, it varies. The standard value of speed of sound we will write, which is standard 340 meters per second. And this 340 meters per second in your nautical miles become 660 knots. इस फिगर को अभी पिक्चर मेमोरी के थ्रू क्लिक कर लो दिमाग में. Students who don't know what is picture memory,
You just mentally assume that you have taken a picture, and whenever you want to recall it in exams, you can just click a picture, like go through the picture, like the whole picture. So you'll write speed of sound. Standard 340 meters at mean sea level. Okay. Now, what is speed of sound? Up इतने दिन students who have done radio and RT, we know that radio waves are EM waves and our sound or audio frequency is modulated and shared across a distance. What is the speed of sound that we are talking about? Speed of sound is the propagation of pressure waves spherically in all directions through air. Propagation is advancement. Sound, what is speed of sound? We will say sound is a weak pressure wave. The word here again is pressure. It has some air. Basically, आप जो बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है बिकॉज हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है एंड वो साउंड में कन्वर्ट हो रहा है. देर इज सम साउंड दैट आई फील इज कमिंग थ्रू मी जस्ट वीक प्रेशर, और ये एयर पे ही सब डिपेंड करता है. इसलिए अगर मैं ज़्यादा जोर से चिल्लाता हूँ मैं ज़्यादा प्रेशर वेव्स क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है. इसलिए जब कुछ लोग चिल्लाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है बिकॉज इट्स ऑल अबाउट दी प्रेशर वेव्स impacting us, or somewhere if we are sensitive will impact our sensitive nature and disturb us. इसलिए मुझे चिल्लाना पसंद नहीं है बिकॉज व्हेन आई शाउट आई थिंक आई क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रेशर वेव्स, नॉट एज वीक. इसलिए शॉक वेव्स इतनी जोर से सुनाई देती है जब भी आप एयर शोज देखते हो. सो साउंड की ज़्यादा बात नहीं होती है हमारे में, बट यहाँ होती है तो हमें समझ लेना है इस चीज़ को. इसीलिए तो लोग सुर निकालना प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? सारे गामा पा एंड ऑल दी फोनेटिक्स ऑफ म्यूजिक. बिकॉज एक तरह का आप प्रेशर निकालोगे तो एक तरह की साउंड आएगी. सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी वही करता है. अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आपको सेम नोट कैसे दे रहे हैं? बिकॉज दे recreate that pressure wave propagating, or sound vibrations as they call it. Sound is a weak pressure wave, or sound is our weak pressure waves. ठीक है, कॉम्बिनेशन ही होता है जनरली. That propagate spherically through the atmosphere, or from their source through the atmosphere. Speed of these waves, okay, the speed of these waves is proportional. इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखा है, प्रोपोर्शनल लिखा है, बट रिलेशनशिप इनडायरेक्ट होने वाली है. प्लीज बी केयरफुल. Speed of these waves is proportional to the square root of the temperature. कौन सा temperature? Absolute temperature of air. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बहुत सिंपल है. It means lower the temperature. Focus here, okay?
lower the temperature, lower is the speed of propagation. That is speed of sound. We know the standard value on a standard assumed day at mean sea level of sound waves is 340 meters per second. That is 660 knots. हम 340 मीटर सेकेंड में सोचते हैं, अरे मीटर पर 340 क्या है, बड़ा नंबर नहीं है. इट्स मीटर्स पर सेकेंड, नॉट किलोमीटर्स पर सेकेंड, वो तो और ज्यादा हो जाता. बट यहाँ पे नॉट्स जो लिखा है हमने, यहाँ पे लिखना है टैस. हाँ, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. Is it 660 knots IAS? Is it 660 knots EAS? Is it 660 knots CAS? No, it is 660. It is 660 TAS. Therefore, at high altitudes and at high TAS, okay, at high altitude and at high TAS, it is important to know speed of aircraft with respect to local speed of sound. Underline local. Actual speed of sound, उस लेवल का, उस ऑल्टीट्यूड का या उस टेम्परेचर का, नॉट दी MSL. लोकल स्पीड ऑफ साउंड विल बी LSS. ये आपका कीवर्ड रहता है, LSS, लोकल स्पीड ऑफ साउंड. द रिलेशनशिप, हर्ष ध्यान देना है, द रिलेशनशिप बिटवीन aircraft TAS and local speed of sound is known as Mach number. एक मैक नंबर कोई कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है. इट्स अ वैल्यू विच इज डिराइव्ड बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टास एंड द लोकल स्पीड ऑफ साउंड. क्या है मतलब? इफ आई एम फ्लाइंग एट मैक 1, it means I'm flying at 660 knots, standard value. But 660 knots TAS मेरा मीन सी लेवल का है, तो मेरे को पूरी रिडक्शन चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज, जैसे भी मेरा टेम्परेचर का इम्पैक्ट होगा. बट मैक 1 will mean my aircraft is flying at the speed of sound. My TAS and my local speed of sound in that particular place are the same. That's Mach 1. इट्स अ बिग डील टू ब्रेक द साउंड बैरियर. बहुत मुश्किल से हमें मिला है वो चीज़. हम नहीं साउंड बैरियर ब्रेक कर रहे थे व्हेन जेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स वेर एडवांसिंग अहेड. थोड़ा टाइम लगा है, थोड़े लॉसेस हुए हैं, बट फाइनली वी कैन डू इट. हाउ डू वी डू इट? स्वेप बैक विंग्स जो हैं हमारे इन्वेंशन, जो हम हैं विंग्स पीछे जाने वाले, दैट इज वन ऑफ द मेन इन्वेंशंस टू प्रिवेंट शॉक वेव्स. फिर भी शॉक वेव आती हैं, आ सकती है, हमारा लिफ्ट ड्रॉप नहीं होता है. दैट इज कंट्रोल शॉक वेव फॉर अस. ऐसे मैं कोई भी एयरक्राफ्ट को स्पीड पे नहीं ले जाऊंगा, बहुत डैमेज होगा मुझे. वॉट एवर यू आर लर्निंग, एनीबडी हु सेज इट्स नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, अंडरस्टैंड उन्होंने कभी लिंक नहीं किया है, भले पेपर पास किया. एंड इट्स ओके, आपको बाद में फ्लाइंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है. एक बार आप समझ लोगे बेस्ट है, नहीं समझोगे आप फ्लाई तो कर लोगे, बट वो नहीं समझोगे एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा फिर.
कि यार पता क्यों नहीं है, प्लेन तो उड़ा रहे बट पता नहीं है, मतलब अरे प्लेन तो सही उड़ा रहे हैं बट पता नहीं है, ऐसा हो जाएगा फिर। एग्जाम्पल लिखो, इफ एयरक्राफ्ट टैस, ओके, is 4/10 of LSS, the Mach meter will show 0.4 m or m 0.4. Example 2, if aircraft TAS is 10 tenths, that is as same as equal to LSS, see the ratio. Mach number of the aircraft will be a Mach meter, which is nothing but an instrument that captures or gives you the speed in Mach number. So dynamic pressure converted to Mach number हो जाएगा वहां पे आपका, बट इसकी फंक्शनिंग कैसी है वो आपको देखनी है इंस्ट्रूमेंट्स में। Will be Mach 1. So जनरली आपकी स्पीड लिमिटेशंस Mach नंबर से भी डिफाइंड रह सकती हैं। नाउ हर्ष का एक और डाउट पूछते हैं हम, व्हाट इज क्रिटिकल मैक नंबर? MCRT ऐसा लिखते हैं हम लोग, दैट इज क्रिटिकल मैक नंबर। ध्यान से समझना है, बहुत सिंपल है ये। व्हाट इज इट? इट इज दैट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट at which any point of the aircraft and or main plane, जनरली मेन प्लेन से ही रिलेटेड होगा, where the air first reaches speed of sound। मेरा एक मेन प्लेन है, ओके, यहां से जा रही है एयर, सब जगह से एयर जा रही है, ओके, सामने से एयर जा रही है। दैट पॉइंट वेयर my speed is equal to LSS, ओके, फर्स्ट, यहां पे नहीं है, यहां पे टैस इज नॉट इक्वल टू LSS, एक जगह पे बस, पहले कौन से पॉइंट पे रीच करेगा, इट कैन बी प्रेडिक्टेड, इट कैन बी प्लान्ड, इट कैन बी मेजर्ड, सच इज द जीनियस ऑफ एयरक्राफ्ट डिजाइन। दैट स्पीड इन मैक नंबर फॉर द होल एयरक्राफ्ट इज क्रिटिकल मैक नंबर। तो अगर मेरा एयरक्राफ्ट reaches MCRT is, and suppose that is Mach 0.6 for my aircraft, suppose, then यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा the first moment where my TAS is matching my airspeed is the same as speed of sound. It should not be the same speed of sound, नहीं होना चाहिए, उससे प्रॉब्लम होती है।
प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा पूरा एयर मास पीछे चला जाता है, हम उसके आगे चले जाते हैं। जब एयर मास पीछे चला जाता है हम उसके आगे चले जाते हैं, वो एयर मास जो हमें लिफ्ट देगा, वो एयर मास हमारे से दूर चला जाता है। तो हमें लिफ्ट कौन देगा? हमें कोई लिफ्ट नहीं देने वाला। तो ये स्पीड हमसे हमारे लिफ्ट ले जाती है पूरा पूरा, बिकॉज वो एयर मास ले जाती है। सो इसके लिए हमें डिजाइन में बहुत मैनिपुलेशन करनी पड़ती है, एयरक्राफ्ट डिजाइन। सो राइट डाउन, you already know it. It is the speed of aircraft at which, so speed of aircraft in Mach number, at which any point of the aircraft and or the main plane where the air first reaches the speed of sound. With speed of sound, local. Write down important note. This is generally the place of maximum thickness of the aerofoil. सो कहीं बुक्स में या सॉरी क्वेश्चंस में आपको एयरफॉयल के रिलेटेड दिया होगा स्पीड एंड पूछा होगा व्हाट इज क्रिटिकल मैक्स। सो जहाँ पे भी मैक्सिमम थिकनेस ऑफ योर एयरफॉयल एग्जिस्ट्स, दैट इज द पॉइंट वेयर चांसेस आर दैट पर्टिकुलर पॉइंट द एयर फ्लो इज रीचिंग द LSS। वहां पे हमें रुक जाना है, वहां पे हम नहीं रुकेंगे और स्पीड बढ़ाते रहेंगे तो पूरे विंग पे धीरे धीरे हमारा एयर स्पीड ऑफ साउंड पे पहुंच जाएगा, एंड उसके बाद दैट इज नॉट गोइंग टू बी गुड। क्यों नहीं, वो हम पढ़ेंगे। सो सब सोनिक मतलब सोनिक के पहले पहले, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के पहले पहले का डायनामिक्स। ट्रांसोनिक मतलब आप स्पीड ऑफ साउंड को क्रॉस कर रहे हो और आगे जा रहे हो, उसके एरोडायनामिक्स। तो पहले हमें सबसोनिक समझना है, बिकॉज हम मोस्टली सबसोनिक ही फ्लाई करता। एंड अगर हम ट्रांसोनिक हो रहे हैं, ऑब्वियसली तुमने देख लिया है, अरे 600 नॉट्स तो मैं अगर फ्लाई करता हूँ तो मैं तो मीन सी लेवल के हिसाब से कितना ही डेंसिटी कम होगा मेरा, ज़्यादा नहीं तो भी। it is very much variable and can be easily compared with each other. Transonic क्या हो रहा है, जब स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर जा रहे हैं उसी को ब्रेकिंग द साउंड बैरियर बोलता है। एंड सबसोनिक बिफोर दैट, सबसोनिक चंक आपका इतना बड़ा है, डीजीसी wants us to study this much, ट्रांसोनिक इतना सही है। बट ट्रांसोनिक सिर्फ एडेड है, ट्रांसोनिक में सबसोनिक आएगा ही आएगा, ये तुम्हें समझना होगा। सो मास्टरी ऑफ सबसोनिक इज इजी। Everything is easy if you focus, revise, you know it, ask questions. But subsonic and then transonic. Supersonic नहीं बोल रहे हैं, हाइपरसोनिक नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। उन सबके डायनामिक्स इंक्रीज होते हैं, चेंज होते हैं, उसमें एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर चेंज होगा, मटेरियल चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। प्रोबेबली फ्यूल भी चेंज करेंगे। Remember, indicated airspeed corrected for इंस्ट्रूमेंट एरर, पोजीशन एरर, कंप्रेसिबिलिटी एरर गिव्स यू इक्विवेलेंट एयर स्पीड। इजी है वो फ्लो चार्ट, बहुत इजी से बनाया है। इतनी क्लैरिटी आपको भी आ जाएगी, रिवाइज करोगे आपको भी आ जाएगी। फालतू में भी कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सीनियर लेवल पे आ गया। अगर आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं, भले आपने और कुछ नहीं पढ़ा हो, आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड आप ऑलरेडी सीनियर्स हो, बिकॉज यू हैव अ कलेक्टिव नॉलेज सो फार, यू आर नॉट जस्ट गोइंग बाय द सिलेबस, यू आर गोइंग लॉजिकली बाय द syllabus, and it's like different jigsaw puzzles in itself being a complete picture. So I'm very happy and very proud कि मेरे मोटिवेशन के बाद कुछ लोगों ने ये लेक्चर अटेंड करना शुरू किया, because I wanted you all to have this live with me, at least some of you all. ऐसे तो मेरा प्लान सिर्फ दो ही बच्चों के साथ करने का था, बट आई थॉट कि अगर आप लोग कर सकते हो, करना चाहिए आपको, बिकॉज दिस इज माई गिफ्ट टू यू फॉर सम ऑफ यू ऑल। सो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि मेरी वी स्पीड्स क्या होती हैं. All my V speeds that you will see or that you have seen in performance, okay, all my V speeds that I see in performance are calibrated air speeds. Only my maximum operating indicated airspeed, VMO, is equivalent airspeed. बाकी वी स्पीड्स कौन सी है? V1, VR, V2 and so on. They all are calibrated airspeeds. Why? Because we are looking at them when aircraft is flying at low speeds. ये सारी लो स्पीड्स है हमारी. टेक ऑफ लो स्पीड पे हो रहा है, लैंडिंग लो स्पीड पे हो रहा है, रोटेशन लो स्पीड पे हो रहा है, एक्सटेंशन ऑफ फ्लैप्स भी लो स्पीड पे होगा. दैट्स वाई. ये नहीं कि मेरी एयरक्राफ्ट लो स्पीड है. मेरी सेम एयरक्राफ्ट जो सोनिक जा सकती है, वो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ लैंडिंग लो स्पीड पे ही लेगी. तो उसके लिए सारी कैलिब्रेटेड एयर स्पीड मैटर करेंगी. वहाँ कैस टैस कन्वर्ट होगा. एंड जब हाई स्पीड में मैं जा रहा हूँ, मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड जो हो जाती है मेरी, वो क्रूजिंग लेवल वाली स्पीड होगी मेरी. वहाँ पे मेरा टैस विल बी रिलेटेड टू ई एस, बिकॉज ई एस हाई स्पीड्स पे होता है. दिस इज द सिंपल डिफरेंस between all the complication that we as students go through. मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा यू स्टूडेंट्स, बिकॉज आई थिंक आई एम ऑल्सो ऑलवेज अ स्टूडेंट. अलग लेवल पे. सब एक ही लेवल है. साथ में पढ़ रहे हैं, साथ में पढ़ा रहे हैं. पायलट्स को सारी इंडिकेटेड एयर स्पीड ही दिखाएंगे, बिकॉज व्हाट वी सी इज व्हाट वी नीड टू फॉलो. सिंपल. बट ये होती है एक ही स्पीड है जो टैस है. बाकी सब प्रेशर है. ये सब डायनामिक प्रेशर का मेजरमेंट है. डायनामिक प्रेशर इज रिलेटेड टू डेंसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्टैटिक प्रेशर. किसका रिलेशनशिप कितना ज़्यादा है कम है वो हमें पता है. डायनामिक प्रेशर इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ एयर. Dynamic pressure is nothing but the one that derives all aerodynamic forces on the aircraft, all air loads on the aircraft. And a pilot's understanding of dynamic pressure is a pilot's understanding of the handling of the aircraft at certain speeds in certain atmospheric conditions. A pilot, when doing a good flight training as per the manual, every time they are not able to perform their maneuvers correctly. Why? Because of the changes in density. आपको हमेशा एक स्पीड दी जाती है, बट आपका डेंसिटी तो बार बार चेंज होता है. तो आपके छोटे मोटे एरर्स होते रहते हैं. इसलिए स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं, सर फर्स्ट टेस्ट है, नर्वसनेस है, अच्छा अच्छा नहीं हो रहा है, अच्छा अच्छा नहीं हो रहा है, क्या करें क्या करें. मैं तो सीधा बोलता हूँ एग्जामिनर को बोलो और इंस्ट्रक्टर को बोलो थोड़ा और प्रैक्टिस करवाए आपको. और मैं बोलता हूँ फील समझो, फील. अब ये वो बच्चे हैं जिन्होंने टेक्निकल नहीं किया है, डायरेक्टली फ्लाई करने गए, कोई उनको पढ़ाएगा भी तो उनको समझ में नहीं आएगा. इसलिए मैं कहता हूँ आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लो अच्छे से और फिर फ्लाइंग के लिए जाओ. आपकी फ्लाइंग बहुत आसान हो जाएगी और ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगी. ये कोई नहीं बताता आपको कि आपको सिखाया है वो चीज़ आप बार बार रिक्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे हो. डेंसिटी को कौन देखेगा? डेंसिटी के एडजस्टमेंट कौन करेगा? स्पीड के एडजस्टमेंट कौन करेगा? और वो सीखेगा कौन? इंस्ट्रक्टर को समझाएगा कौन? इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर से समझेगा कौन? भाई इतना टेंशन नहीं लेना, बिकॉज इट eventually it happens. Eventually it happens, you learn. But if you understand things carefully and if you can understand the weather before you take off, then you would know a little difference in your feel of the aircraft will give you a perfect maneuver. बस. कुछ नहीं और. नहीं समझोगे तो आप वही सेम चीज करोगे और आपको कुछ अलग आउटपुट मिलेगा और आप खुद पे सवाल उठाओगे मेरे से गलती क्या हो रही है. इतना सा डिफरेंस होता है बस कभी कभी. है ना? तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना. एंड जब भी फ्लाई करो तो रिलेट करना और फील करना. डायनामिक प्रेशर को कॉकपिट कंट्रोल पे फील करना. इंस्ट्रूमेंट्स को देखते रहना. आसपास का स्कैन करते रहना. ट्रेनिंग को याद करो, चेकलिस्ट को याद करो. ये चार पांच चीज़ों के साथ एक साथ आप काम करते हो. एंड देन यू फ्लाई इजीली एंड यू लैंड इजीली एंड यू टेक ऑफ इजीली. है ना?
Any questions? Go through your notes, see if you have any questions. Take a couple of minutes to soak everything in. I'm done delivering the lecture, but I'm not done resolving your doubts or your questions. So if you have any questions, please feel free to let me know. All these speeds are pressures. Only one true airspeed or real airspeed, that is TAS. We know the differences. जिनको नेविगेशन डिवीजन नहीं हुआ था ये चीज का, भाई इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता. Students would be interested into reading notes. Everybody has to definitely. Give me some time, I'll be sharing it with you all. Almost everything is important. I'll not be taking a test right now. Don't worry. We'll be starting with aerodynamic theory, which is basically two theorems, principle of continuity and Bernoulli's theorem. What is principle of continuity? Many people don't know that. They just think flight is obtained just by Bernoulli principle. But there are two principles involved. That is equation of continuity and then the Bernoulli principle together give me my reaction forces, which is nothing but my lift, and we'll see the relationship between other forces. We'll also see two-dimensional airflow over an airfoil, stream tubes, streamlines. Then everything becomes easy for us to understand. Subsonic airflow, where we check, okay, we get into details of aerodynamics or what do we say? Characteristics and different parts of an airfoil cross section. What is a chord? What is max camber? What is leading edge? What is leading edge radius? Where do we have maximum thickness? What is lift? What is drag? How are my forces generated? What is thickness to chord ratio? What is relative airflow? Center of pressure. One of the students was asking me about center of pressure. Angle of attack. Two-dimensional airflow. Basically, all that we're learning is two-dimensional airflow only. Then we'll see the distribution of pressure. Pressure एक airfoil के पीछे कितने range तक रहता है वो भी हम देखेंगे. It's very simple. Angle of attack का क्या influence होता है? 0 to 8, 0 to 16, higher angle of attack, lower angle of attack. Force coefficients, lift coefficient. And then you'll come across, just like what you have center of gravity, you have something called as aerodynamic center. वो क्या होता है? Aerodynamic pitching moments होती हैं around the aerodynamic center in an airfoil. Asymmetrical airfoil में कैसा होता है? Symmetrical airfoil में कैसा होता है? Airflow का क्या pattern है? Now that becomes, now we are ready to start. And then we talk about lift in detail. Airflow समझ गए, फिर हम lift को समझेंगे. तो उसके लिए एयरफ्लो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है हमारा. एयरफ्लो स्ट्रांग होने के लिए डेंसिटी का रिलेशनशिप समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. एंड लेफ्ट के बाद हम ड्रैग देखेंगे, विंग के बारे में देखेंगे, वर्टाइसिस देखेंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें वो कंट्रोल ओवर बाउंड्री लेयर जो हम देख रहे थे फ्लैप्स में, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी. Then that wake turbulence category is also something that can be seen. Wingtip vortices. Why do we have winglets? Why do we have those sharklets? सब समझ में आएगा. Vortices, vorticity जो पूछ रहे हैं डेफिनेशंस में वो भी समझ आएगा. ग्राउंड इफेक्ट इज समथिंग आपको वो समझ में आएगा. बहुत अच्छी चीज़ें हैं. फिर पूरा पूरा आप बस इस दुनिया में खो जाओगे आप. एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एयरफॉयल. एवरीथिंग. एंड देन ऑफ कोर्स लिफ्ट पढ़ेंगे तो हम ड्रैग भी पढ़ेंगे. और उसके बाद स्टेबिलिटी. एक अच्छी चीज़ है, हमें वेट नहीं पढ़ना है बस. थ्रस्ट पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंजन्स. लिफ्ट और ड्रैग हो गया इसमें. वेट हमने नेविगेशन में मास एंड बैलेंस कर ही लिया या करेंगे.
Depends where you are in life with respect to your ground studies. एंड ऑफ कोर्स स्टॉलिंग भी पढ़ेंगे हम लोग. स्टॉलिंग से कैसे रिकवर करना है. इंटरेस्टिंग राइट. फेंसेस होते हैं विंग्स में. स्टॉल के क्या टाइप्स हैं. स्टॉल प्रिवेंशन कैसे होता है. सिंपल. स्टॉल पे लोड फैक्टर क्या आता है एयरक्राफ्ट पे. उससे एयरक्राफ्ट ब्रेक भी हो सकती है. यस मुस्कान, व्हाट्स ऑन योर माइंड. Sir, what about aircraft spin? स्पिन भी स्टॉल में आएगा. वेरी नाइस. व्हाट इज स्पिन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्पिनिंग. एयरक्राफ्ट कभी भी स्टॉल होती है ना, उस स्टॉल की वजह से एयरक्राफ्ट स्पिन में घुस जाती है. एंड द स्पिन इज जनरली when the aircraft is descending in a helical path. दोनों विंग्स पे उसका स्टॉल एंगल के ऊपर चला जाता है एंगल ऑफ अटैक. स्पिन भी आएगा. स्पिन स्टॉल के एंड में आता है एंड स्पिन से रिकवरी होती है तो कैसी होगी रिकवरी. वो सब भी बेसिक हम लोग देखेंगे. स्पेशल टाइप ऑफ स्टॉल भी देखेंगे हम. जो जो है हमारे सिलेबस में उसके अंडर ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको. मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा. बट अच्छा इंटरेस्टिंग है. उसके बाद आप सब अपने आप एक बार रीड करोगे सब समझ आएगा. रीड करोगे समझ आएगा बिकॉज आपके जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एयर फ्लो डिस्टर्ब की वजह से ही सब हो रहा है. एयर फ्लो समझ गए एंड थियरी समझ गए एंड एयर डेंसिटी की प्रॉपर्टी समझ गए. बस बाकी सब एकदम इजी हो जाता है पढ़ने के लिए. आपको रिलेशनशिप ऑफ स्पीड तो पता ही चल गया. आगे हम बस कैम्बर एंड एंगल ऑफ अटैक देखेंगे बेसिक एरोडायनामिक थियरी में. वो चार पांच जिक्सॉ पजल्स को आप लेके चलोगे तो इट बिकम्स लाइक बेसिक इंग्रेडिएंट्स फॉर एनी शेफ जिसके साथ शेफ अपनी स्पेशल तरीकों से नई नई डिशेस बना सकता है ना. हाई लिफ्ट डिवाइसेस तो हमें थोड़ा बहुत पता ही है. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स. आई सी यू टुमारो. Maybe that live sessions बता रहा हूँ and we need to simulate live sessions to give our students the feel of live sessions in their busy environment like work environment. Like कितने अच्छे जो केबिन क्रू कर रहे हैं and they want to become pilots, उनके लिए बहुत difficult होता है रेगुलरली पढ़ना. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड नॉटिकल स्टूडेंट्स एक लाइफ जी चुके हैं, 10 साल करियर बना चुके हैं. नाउ दे वांट टू परस्यू, दे हैव बीन सेविंग मनी एंड दे वांट टू लर्न. जेन्युइन स्टूडेंट्स है, दे वांट टू लर्न एंड गो अहेड. So we are doing this for them. So let's make the most benefit out of it, students. Study carefully, read. अपने notes enough हैं. Reading material ऊपर से obviously I'll upload it. आपको share करूँगा. अपने अगर आप लोग को ज़्यादा बाहर के emails आ रहे हैं तो सबको एक एक करके unsubscribe कर दो. वैसे तो मैं आपको WhatsApp पे मैसेज छोड़ता रहता हूँ. सो नोट जैसे अपलोड होंगे आपको ईमेल आ जाएगा, आपसे शेयर होंगे. तब तक आप ये नोट्स पढ़ लो एंड थोड़ी घाई होगी तो पूछ लेना सर कब तक भेज रहे हैं. तब तक you can revise from your notes and just take a break or otherwise. Okay, students, I'll take a leave from this session. Next time when I'm asking you a question, if you cannot give me a correct answer, at least take responsibility in that situation so that, I'm only feeling happy that ठीक है यार उसको कुछ आता नहीं है but he has a plan for it, she has a plan for it. Simple. I want you all to make me proud and happy. You can do it by giving correct answers to questions or saying that you're going to put in the correct effort. दो चीजें आपने बोल दी और मैंने दो चीजें आपको बोल दी, दैट शुड नॉट ब्रेक योर कॉन्फिडेंस. यू शुड अंडरस्टैंड ओके ओके आई एम मिसिंग समथिंग, व्हाट एम आई मिसिंग, सर मेरे को टाइम दो, मेरे को बताओ क्या हो रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आई नीड टू फिक्स इट. सिंपल है ना. डोंट गेट कैरिड अवे. इट्स इजी. इट्स इजी व्हेन यू फोकस, अंडरस्टैंड एंड देन व्हेन यू रिवाइज and when you cross check things that cause you confusion with your instructor. That's it. Take care, students. I'll leave. And if you need anything, drop me a message and I'll be there for you. Take care, students. मैं पहले जा रहा हूँ, ठीक है.